So this is an RC that is taken from CAT 2021 slot 3. So this RC talks about how the language, which is the most human of all attributes, is innate. Innate means that is inborn. So how the language faculty is basically innate human attribute. So very interesting passage. So इसको हम देखते हैं, and then we'll solve these questions also which are given along with this RC. तो इसको समझते हैं हम क्या है इसमें. Starting in 1957, Noam Chomsky proclaimed a new doctrine, language that most human of all attributes was innate. So this person, Noam Chomsky, he's basically called the father of modern linguistics. He's an American professor and a public intellectual. So he's written many books, done many researches on language. So he is a very famous personality, of course. And he, in 1957, proclaimed a new doctrine. मतलब एक नई बात बोली उसने कि लैंग्वेज जो है वो इनेट है. लैंग्वेज हमें हमारे अंदर ही है. लैंग्वेज की जो फैकल्टी है, the grammatical faculty was built into the infant brain. And your average 3-year-old was not a mere apprentice in the great enterprise of absorbing English from his or her parents, but a linguistic genius. Okay, what he says is कि जो grammatical faculty है, हम जैसे grammar को use करते हैं अपनी language, कोई भी language हो, हिंदी हो, English हो, तो हमारे brain के अंदर जो infant brain, मतलब जो child में हम जो पैदा होते हैं, infant जो होते हैं 0 to 2 years के, तभी हमारे अंदर ये built in होती है. और हमारा जो 3 साल का एक average 3-year-old person है, child है, he's not an apprentice. Apprentice मतलब नौसिखिया, कोई trainee. Apprentice basically means trainee. He's not a trainee of in the great enterprise of absorbing English from his or her parents, but a linguistic genius. तो ये कोई ऐसा, इसको आप ये मत समझो कि कोई ये नौसिखिया सा बच्चा है, इसको कुछ नहीं पता इंग्लिश, ऐसा नहीं है. He is a linguistic genius. That is what this fellow Noam Chomsky says. Since this message was couched in terms of Chomskyan theoretical linguistics in discourse so opaque that it was nearly incomprehensible even to some scholars, many people did not hear it. अब ये जो जो इसने ये मैसेज दिया था, ये इसकी एक थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक्स की भाषा में, चोम्स्कियन भाषा बोलते हैं जिसको, या हम ये कह सकते हैं कि ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में था, इन अ डिस्कोर्स सो ओपेक कि आम आदमी को समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो इवन सम स्कॉलर्स को समझ नहीं आया. तो ये लोगों ने इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया. तो 1957 में जब नोआम चॉम्स्की ने कहा कि लैंग्वेज फैकल्टी हमारी इनबॉर्न है और एक छोटा सा बच्चा जो है वो भी ग्रामर का, वो भी लिंग्विस्टिक जीनियस है, तो ये मैसेज जिस तरीके से उसने कहा, उससे काफी लोगों को ये बात समझ नहीं आई. लेकिन अब क्या हो गया? नाउ इन अ ब्रिलियंट, विटी एंड ऑल टुगेदर सैटिस्फाइंग बुक, Mr. Chomsky's colleague Steven Pinker has brought Mr. Chomsky's findings to every man. In The Language Instinct, he has gathered persuasive data from such diverse fields as cognitive neuroscience, developmental psychology, and speech therapy to make his points. And when he disagrees with Mr. Chomsky, he tells you so. Okay, so now we get the context of what this passage will be all about. तो ये passage में क्या बोला गया? अब बोला गया है कि देखिए, जब ये 1957 में इसने ये बात बोली चॉम्स्की ने, तो किसी को समझ नहीं है. लेकिन नाउ एक बहुत ही अच्छी, ब्रिलियंट, विटी और सेटिस्फाइंग बुक लेके आए हैं मिस्टर चॉम्स्की के कलीग स्टीवन पिंकर. तो ही इज ऑल्सो वेरी फेमस personality in US academics. Steven Pinker, he's also written many books. He's brought Chomsky's findings to every man. और इन्होंने एक बुक लिख दी है अभी, The Language Instinct, जिसमें he has gathered data from very diverse fields, जो कि ये सब बताई गई हैं, to make his points. And when he disagrees with Mr. Chomsky, he tells you so. जब हम इस तरह के पैसेज पढ़ रहे होते हैं, तो हमें ये भी देखना होता है कि क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें हम अभी फिलहाल ओवरलुक कर सकते हैं, बट लेटर ऑन इट कुड बी अ पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन. सो जैसे ये बताया गया है कि इसने बहुत बड़ा डेटा, इन्होंने बहुत सारा डाइवर्स फील्ड से कलेक्ट किया. इसको मे बी राइट नाउ वी डोंट नीड टू रियली गेट टू डीप इनटू इट, बट क्वेश्चन इसके ऊपर अगर बेस्ड हो तो हम आ सकते हैं चेक करने के लिए. आप राइट. सो द फर्स्ट पैराग्राफ व्हाट ही सेज इज, ये मिस्टर चॉम्स्की ने 1957 में बोला था कि ग्रामर की जो फैकल्टी है, हमारी लैंग्वेज इंस्टिंक्ट है, वो हमारे अंदर इनबॉर्न आती है. हम जब पैदा होते हैं तो लेके पैदा होते हैं. ये चीजें उस टाइम पे लोगों को समझ नहीं आई. लेकिन अब एक स्टीवन पिंकर इनके कलीग है, ही हैज ब्रॉट दिस आउट इन अ फैंटास्टिक बुक कॉल्ड द लैंग्वेज इंस्टिंक्ट. And he has made his points, but of course he has disagreed also in certain places. When he disagrees, this means he doesn't disagree with Mr. Chomsky what he said, but in certain places he disagrees, and he tells you so that I don't agree with Mr. Chomsky's views in those areas, right? So this is the first paragraph. Let's go to the second one. For Mr. Chomsky and Mr. Pinker, somewhere in the human brain, there is a complex set of neural circuits that have been programmed with super rules, making up what Mr. Chomsky calls universal grammar, and that these rules are unconscious and instinctive. तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये दोनों ही जो सेम बात कह रहे हैं. तो ये नाउ दे आर एग्रीइंग दैट ह्यूमन ब्रेन में एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ न्यूरल सर्किट्स है जिसमें सुपर रूल्स प्रोग्राम कर दिए गए,
जिसको कि यूनिवर्सल ग्रामर कहा जाता है. एंड दीज रूल्स आर अनकॉन्शियस एंड इंस्टिंक्टिव. दैट मीन्स वी डोंट इवन रियलाइज एनीथिंग और वी डोंट इवन थिंक अबाउट देम. दे आर इंस्टिंक्टिव. मतलब जैसे हम रिएक्ट करते हैं किसी भी इंस्टिंक्ट वैसे ही हम ग्रामर के रूल्स को भी रिएक्ट करते हैं. सो विच मीन्स दैट देयर इज अ सेट ऑफ सर्किट्स इन आवर ब्रेन दैट हैज बीन प्रोग्राम्ड फ्रॉम अबव. मतलब ऊपर से ही हम उसको प्रोग्राम करा के लाए हैं सुपर रूल्स में ग्रामर के. और ये हमें पता भी नहीं चलता. A half century ago, this would have been pooh-poohed. Okay, what is the meaning of this term pooh-poohed? As black box theory, since one could not actually pinpoint its grammatical faculty in the specific part of the brain or describe its functioning. ये कह रहा है 50 साल पहले लोगों ने इसको पूह 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 मीन्स टू डिसमिस. डिसमिस कर देना. किसी भी चीज को डिसमिस करना, अरे ये तो फालतू की बात है, राइट? यू से इट इज क्रैप, आई डोंट एग्री. तो व्हेन यू पूह पूह समथिंग, यू बेसिकली डिसमिस समथिंग. सो 50 साल पहले ये चीज को ब्लैक बॉक्स थ्योरी बोला गया. बोल दिया जाता कि यार ऐसा कोई सर्किट है क्या हमारे ब्रेन में, क्योंकि हमारे ब्रेन में कोई ऐसी ग्रामेटिकल फैकल्टी का कोई सर्किट है या उसकी फंक्शनिंग तो डिस्क्राइब होती नहीं थी उस टाइम पे. बट नाउ थिंग्स आर डिफरेंट. Neurosurgeons have now found that this black box is situated in and around Broca's area and on the left side of the fourth brain. तो अब न्यूरोसर्जन्स ने ढूंढ लिया है वो ब्लैक बॉक्स जहाँ पे हमारे अंदर ग्रामेटिकल फैकल्टी होती है, जो सेट ऑफ सर्किट्स होते हैं जो हमारी ग्रामर को हमें यूज करने में हेल्प करते हैं. तो दैट ब्लैक बॉक्स न्यूरोसर्जन्स हैव बीन एबल टू फाइंड. सो दिस पैराग्राफ adds to whatever was written here, and it says that मिस्टर चोम्स्की और मिस्टर पिंकर ये कहते हैं कि एक हमारे ब्रेन में कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सर्किट्स है और ये रूल्स फॉलो करके करता है जो कि प्रोग्राम होके आया है ऊपर से. तो 50 साल पहले तो इस चीज को डिसमिस कर दिया जाता because nobody would actually know where this black box is. But now neurosurgeons have found this black box where it is situated. Now, so this paragraph talks about the ideas that Mr. Chomsky and Mr. Pinker shared. That means similarities in what they both thought. Whereas now the third paragraph talks about, unlike Mr. Chomsky, Mr. Pinker firmly places the wiring of the brain for language within the framework of Darwinian natural selection and evolution. He effectively disposes of all claims that intelligent non-human primates like chimps have any abilities to learn and use language. तो अब मिस्टर चोम्स्की ने बेसिकली कुछ बातें अलग की थी, लेकिन मिस्टर पिंकर ने कुछ चीजें अलग बोली हैं. उन्होंने कहा कि जो वायरिंग ऑफ ब्रेन फॉर लैंग्वेज है ये डार्विनियन नेचुरल सिलेक्शन एंड एवोल्यूशन के तहत आता है. नाउ व्हाट इज डार्विनियन नेचुरल सिलेक्शन? नाउ डार्विनियन नेचुरल सिलेक्शन सेज दैट whichever traits that help a species survive will basically be enhanced and passed on to the offsprings. मतलब जो traits आपको survive करने में help करते हैं वही traits आप pass on करोगे अपने offsprings में और फिर उसी तरह से वो survive करते जाते हैं. जो survival of the fittest, अगर आपने ये सुना हो term survival of the fittest, मतलब सिंपल एग्जांपल है जैसे एक जिराफ है. तो अब जिराफ को जो था उसको, जब वो जिराफ की गर्दन इतनी लंबी नहीं होगी तो उसको खाने पीने में दिक्कत होती होगी, दूसरे एनिमल से वो लड़ाई नहीं कर पाता होगा. बट the traits that he got, where he had a long neck and he could rise above all the other animals and eat directly from trees, वो traits ने उसको सर्वाइव करवाया और वही traits फिर पास ऑन होते गए उसके जो ऑफस्प्रिंग्स है उसके दूसरे जो बच्चे पैदा हुए और जो उनके फिर बच्चे हुए, राइट? सो इट पासेस ऑन. तो दैट इज डार्विनियन नेचुरल सिलेक्शन. तो ये बोल रहा है कि मिस्टर पिंकर से दैट जो हमारी वायरिंग फॉर ब्रेन फॉर लैंग्वेज है ये भी नेचुरल सिलेक्शन के फ्रेमवर्क में ही आती है. दैट मीन्स दिस हैज हेल्प्ड ह्यूमंस सर्वाइव and then pass on this particular trait to the offspring. So he places it within the framework of this, whereas Mr. Chomsky did not. He effectively disposes of all claims that intelligent non-human primates such as chimps have any ability to learn a new language. तो वो बिल्कुल ही क्लियर कट बोलता है कि कोई भी इंटेलिजेंट हो, भले नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स, मतलब जो चिंपांजी मंकी ये सब लोग होते हैं इन्हें प्राइमेट्स कहते हैं. तो he disposes the claim that any intelligent non-human primate like chimps have any ability to learn and use language. तो उसके हिसाब से इनके अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है लैंग्वेज यूज करने की. बिकॉज ऑब्वियसली ह्यूमंस हैव बिकम ह्यूमंस, होमोसेपियंस जो हम बन रहे हैं अभी, तो दैट इज बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड देयरफॉर दोस ट्रेट्स व्हिच हेल्प्ड अस इवॉल्व हैव रिमेन्ड विद इन ह्यूमंस. तो और मंकीज जो थे उनके अंदर वो ट्रेट्स नहीं थे तो वो मंकीज रह गए. सो दैट्स व्हाई मंकीज कैन नॉट यूज, दे डोंट हैव द एबिलिटी टू लर्न यूज लैंग्वेज. It is not that chimps lack vocal apparatus to speak. It is just that their brains are unable to produce or use grammar. उनके पास बोलने की शक्ति है. जो जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जो गले में जो बोलने के लिए जो apparatus होता है वो तो है उनके पास. But then the brain doesn't have this circuitry which can use or which can produce or use grammar. This has not been passed on to monkeys. On the other hand, the language instinct, when it first appeared among our most distant hominid ancestors, must have given them a selective reproductive advantage over their competitors, including the ancestor chimps.
और जो ये लैंग्वेज इंस्टिंक्ट थी, जब ये फर्स्ट आई हमारे किसी होमिनिड एंसेस्टर्स जो बहुत पहले हुआ करते, तो उनको डेफिनेटली एक एडवांटेज मिला, और वही एडवांटेज उन्होंने अपने फिर जीन्स में पास ऑन कर दिया. So this particular paragraph talks about how Mr. Chomsky and Mr. Pinker differ. Mr. Pinker places uh, the language capability within the framework of Darwinian natural selection, and that therefore he says that no species other than humans have the ability to use language, though the other species like monkeys, they have the apparatus, vocal apparatus to speak, but they are not able to use grammar. And we humans have this language instinct. So, according to Mr. Pinker, the roots of the language must be in genes, but there cannot be a grammar gene any more than can be a gene for heart or any other complex body structure. अब देखो, एक ये चीज हमें समझनी चाहिए कि जो जीन्स होते हैं, सपोज somebody says कि इसके तो जीन्स में ही है. जीन्स मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक जीन्स पिन पॉइंट नहीं कर सकते. सपोज somebody is short because the family में सारे लोग short, so we cannot find any specific gene that is responsible for the lack of height in that particular family. It is a There's no one gene. Okay, it's the entire genetic makeup of that person or that person's family that is responsible for whether the person is short or tall or bulky or whatever. तो जो भी traits हम genetically acquire करते हैं, some people have heredity issues eyesight के, किसी के parents भी के चश्मा लगाते हैं, बहुत ज्यादा नंबर होता है, तो बच्चे भी, so that those genes are passed, but then there is no one specific gene. तो इसी तरह से ये कह रहा है कि जो roots of the language genes में है, but एक grammar gene नहीं है हमारे यहाँ. तो दिस proposition will undoubtedly raise the hackles of some behavioral psychologists and anthropologists, for it apparently contradicts the liberal idea that human behavior may be changed for better by improvements in culture and environment, and it might seem to invite the twin bugaboos of biological determinism and racism. तो अब ये जो जिस तरह से ये पिंकर जी की बातें हैं, तो इससे कुछ लोग जो है वो जरूर ऑफेंस ले लेंगे. दैट मीन दे विल नॉट लाइक दिस, because there are certain anthropologists or behavioral psychologists which say that human behavior can be changed for better by improvement in culture and environment. मतलब अब एक ये जो एक बहुत ही टसल चलती है बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट में और एंथ्रोपोलॉजिस्ट में कि जो भी हमारे ट्रेड्स होते हैं, वट एवर पर्सनैलिटी वी हैव, इज इट बिकॉज ऑफ हेरिडिटी और इट इज बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स और इट इज बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट और कल्चर. सो व्हाट इज द रोल दैट ईच प्लेज. इफ लेट्स से सपोज समबडी सेज कि यार ये जो हमारे ग्रामर की जीन्स है तो जीन्स में, तो दैट मीन्स कि अब अगर किसी में ये जीन्स नहीं है तो क्या उसको उसके अंदर ग्रामेटिकल फैकल्टी नहीं होगी, ऐसा लगता है. तो इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्ट हो गया वो आइडिया दैट ह्यूमन बिहेवियर में बी चेंज फॉर द बेटर बाय इंप्रूवमेंट्स इन कल्चर एंड एनवायरनमेंट, एंड इट माइट सीम टू इनवाइट द ट्विन बगाबूज. बगाबूज मींस ऑब्जेक्ट्स ऑफ फियर. ऑब्जेक्ट्स ऑफ फियर जो डरने की कोई बातें होती है, जो जिससे डर जाते हैं लोग, बगाबूज ऑफ बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म एंड रेसिज्म. तो ये रेसिज्म वाली बातें थोड़ी थोड़ी सी लग रही है इसमें, क्योंकि जैसे ब्लैक्स होते हैं तो ब्लैक में हम कहते हैं कि ब्लैक जीन उसने उसको पास ऑन हो गया, तो अब वो चाहे एनवायरमेंट से लाख कुछ भी कर ले, उसका ब्लैकनेस तो हटा नहीं सकता वो, राइट. सो दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म. दैट मींस योर व्हाटएवर योर कैरेक्टर ट्रेट्स देयर आर ऑल डिटरमिन्ड बायोलॉजिकली, राइट. इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं कि ब्लैक्स, जैसे यूएस में ब्लैक्स को सस्पिशियस से व्यू करते हैं, सस्पिशन से कि ये तो गुंडा ही है, ये तो क्रिमिनल ही है, ये तो बदमाश ही है, राइट. तो दिस काइंड ऑफ स्टीरियोटाइपिंग इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म एंड रेसिज्म. तो अगर मिस्टर पिंकर कह रहे हैं कि हमारे जो ग्रामर के जीन्स है वो बायोलॉजी के अंदर है, दैट मींस इनहेरिटेड है और वो जीन्स हैं, तो दिस सम पीपल माइट नॉट लाइक दिस आइडिया बिकॉज इट थिंक्स दैट it appears that he's basically raising these issues, sensitive issues of biological determinism. But yet, लेकिन ऐसा नहीं है. मिस्टर पिंकर stresses one point that there should allay such fields. Allay means pacify. लेकिन मिस्टर पिंकर कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है. ओके, मैं जो कह रहा हूँ कि बायोलॉजिकली ये जेनेटिकली डिटरमिन्ड होते हैं ग्रामर के रूप, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के अंदर होंगे या किसी के अंदर नहीं होंगे, ऐसा नहीं है ये. ओके, ही इज ट्राइंग टू pacify such fears. Even though there are 4,000 to 6,000 languages today, they are all sufficiently alike to be considered one language by extraterrestrial observers. तो ये लैंग्वेजेस भले हमारी बहुत सारी हों, 4,000, 6,000, 7,000, लेकिन ये काफी कुछ सिमिलर ही है. ठीक है. मोस्ट ऑफ द डाइवर्सिटीज of world's culture so beloved to anthropologists is superficial and minor compared to the similarity. जो डाइवर्सिटीज हैं हमारे वर्ल्ड के कल्चर की, जिसको कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट इतना इतना ज्यादा उनको अच्छा लगता है, वो सुपरफिशियल है. दैट मींस ऊपर ऊपर से एक जैसी दिखती है, लेकिन बहुत ही सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है. रेशियल डिफरेंसेस आर लिटरली ओनली स्किन डीप. अब ये थोड़ा पन जैसा है यहाँ पे कि रेशियल डिफरेंसेस आर ओनली स्किन डीप. दैट मींस इट इज नॉट देयर ऑन द डीप बिलो द सरफेस. सिर्फ स्किन से ही रेशियल डिफरेंसेस है. दिस इज लाइक अ you can say is trying to use pun here as a figure of speech. So racial differences are only skin deep.
The fundamental unity of humanity is the theme of Mr. Chomsky's universal grammar and of this exciting book. Humanity जो है वो fundamentally एक ही. Okay, so this last paragraph basically raises an issue of biological determinism, wherein some anthropologists might feel that Mr. Pinker's claim that roots of language is genes could give rise to biological determinism, but Mr. Pinker says no, nothing like that. In fact, जो भी हमारे differences हैं कल्चर में जो हम कहते हैं या लैंग्वेजेस के कारण वो बहुत ही माइनर हैं. Similarities are much more. That means we all have the genes, those genes. So we don't need to worry about किसी के अंदर वो genes ग्रामर के नहीं है, किसी के अंदर है, किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज्यादा है, ऐसा नहीं. Because even though people may speak different languages, but basically grammar सबकी almost similar सी ही है. Right? Fundamental unity of humanity is the theme of Mr. Chomsky's universal grammar and of this exciting. All right, so that's about this paragraph. I hope you understood. एक बार recap कर लेते हैं quickly, इसमें main idea देख लेते हैं. तो मिस्टर चोम्स्की ने 1957 में एक थॉट प्रोपोगेट किया था कि लैंग्वेज की जो फैकल्टी है, इंस्टिंक्ट है, वो फंडामेंटल है. लेकिन उस टाइम पे जिस तरीके से ये बातें बोली गई थी लोगों को समझ में नहीं आई थी. नाउ मिस्टर पिंकर हैज कम अप विद अ वेरी विटी एंड फैंटास्टिक बुक वेयर he's taking forward this idea of Mr. Chomsky, and of course in certain places he differs also. Now there is a black box as per both of them. We human beings के अंदर एक complex set of circuit, और ये पहले तो पता नहीं था लोगों को, लेकिन अब न्यूरो सर्जन ने इसका जगह पता लगा लिया कहाँ पे है. थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में मिस्टर चोम्स्की और मिस्टर पिंकर की अप्रोच की. मिस्टर पिंकर सेज कि ये डार्विनियन नेचुरल सिलेक्शन के फ्रेमवर्क में आता है लैंग्वेजिस्टिक, एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो अदर स्पीशीज अदर देन ह्यूमंस हु कुड स्पीक और एबिलिटी टू लर्न एंड यूज लैंग्वेज. Then Mr. Pinker goes on to say that his roots lie in genes, which could raise the hackles or which could trouble some anthropologists, but he tries to pacify those fears by saying that ऊपर ऊपर से भले ही हम अलग लगते हो, but on below the surface we are all the same. And this grammar is a universal grammar, and that is present and passed on in human beings in the genes. Let's look at the questions. Which of the following statement best summarizes the author's position about Pinker's book? Anatomical developments like the voice box play a key role in determining language acquisition skills. ये बिल्कुल झूठ है. This is totally wrong because very clearly यहाँ पे बताया गया है कि जो चिम्स के पास में ऐसा नहीं है कि वोकल अपैरेटस नहीं है उनके पास वोकल अपैरेटस, लेकिन उनके ब्रेन के अंदर वो ग्रामर प्रोड्यूस करने की फैकल्टी नहीं है. Therefore, this is wrong, factually wrong. So this is a wrong answer. The universality of the language instinct counters claim that Pinker's book is a racist. Yes, Pinker's book is a racist ऐसा लोगों ने कहने की कोशिश की थी, लेकिन पिंकर ने उन्हें शांत कर दिया ये बोलते हुए कि लैंग्वेज इंस्टिंक्ट यूनिवर्सल है. ऐसा नहीं है कि अगर आप ए लैंग्वेज बोलते हो तो आपके अंदर कम है, बी लैंग्वेज बोलते हो तो ज्यादा है, एंड देयर इज अ बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन द स्पीशीज और द ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज ऑफ ग्रामर जीन. ऐसा नहीं है. सो दिस लुक्स ओके, वी विल कीप इट. The evolutionary and deterministic framework of Pinker's book makes it racist. This is exactly the opposite. Okay, ये ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि ये Pinker's book racist है, लेकिन उसकी बुक racist नहीं है. ऑथर की पोजीशन क्या है? We have to talk about author's position, not those anthropologists. Yes, those anthropologists यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि जो ये यहाँ लिखा हुआ है कि बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट जरूर सोच रहे हैं कि ये एक रेसिस्ट है, लेकिन ऑथर नहीं सोच रहा है. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. कल्चर एंड एनवायरमेंट प्ले अ की रोल इन शेपिंग आवर एक्विजिशन. ये बिल्कुल गलत है. कल्चर एंड एक्विजिशन और एनवायरमेंट का रोल नहीं है, ये हमारे जीन्स के अंदर है. एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज इज थ्रू जीन्स. ओके, इट इज देयर इन आवर ब्रेन. सो देयरफॉर दिस इज आल्सो रॉन्ग. करेक्ट आंसर इज ट्रू. तो बहुत इजी क्वेश्चन था. इसमें तीन बिल्कुल ही क्लियर कट, इनफैक्ट ये वन ऑफ द इजियर क्वेश्चंस आई वुड से, जहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, आपको ज्यादा इंफर करने की भी जरूरत नहीं. According to the passage, all of the following are true about the language instinct except. Now this is a favorite type of question of CAT. Except वाला question. इसमें से तीन सही हैं. All the following are true except एक नहीं है. All intelligent primates are gifted with it. Now this is totally false. This is not true. Intelligent primates जो हैं, intelligent non-human primates जो हैं, उनके अंदर ये ability to use language नहीं. Clearly बोला गया. This is false. Okay, so we can keep this. This could be the answer. Not all intelligent primates are gifted with it. This is true, no? Not all intelligent primates are gifted with it. This is true, right? So this is true. Developments in neuroscience have increased its acceptance. Developments in neuroscience have increased its acceptance. तो ये लिखा हुआ है. The persuasive data from diverse fields such as cognitive neuroscience
development psychology and speech therapy. तो ये तो दिया हुआ है, development in neuroscience ने increased acceptance, तो ये भी नहीं है आंसर. It confers an evolutionary reproductive advantage, ये भी दिया हुआ है यहाँ पे. It have given them a selective reproductive advantage, बहुत clearly दिया हुआ है. This also is given. So these three are given. One is the correct answer. All intelligent primates are not gifted. Okay, so this is not true. Okay, easy question था ये. From the passage, it can be inferred that all of the following are true about Pinker's book, except that Pinker. So इसमें से भी तीन true हैं, एक नहीं. Writes in a different style from Chomsky. He writes in a different style from Chomsky. Can we say that this is true? Yes. How we can say that? यहाँ लिखा हुआ है कि जो Chomsky का message था, it was in terms of Chomskyan theoretical linguistics. Discourse was so opaque that means बिल्कुल ही समझ नहीं आया लोगों को. It was nearly incomprehensible even to some scholars. Now in a brilliant, witty and altogether satisfying. So now he writes in a different style. He written in a brilliant and witty manner. So therefore we can surely say that he writes in a different style. This is not the answer because ये true है. यहाँ पे भी accept का question. Disagrees with Chomsky on certain grounds. So this is also true. He disagrees with Mr. Chomsky on certain grounds. यहाँ लिखा हुआ है when he disagrees with Mr. Chomsky, he tells you so. ये भी लिखा हुआ है unlike Mr. Chomsky. So this also is true. So not the answer. Draws extensively from Chomsky's propositions. ये भी लिखा हुआ है. He draws from Chomsky's propositions, right? Mr. Chomsky has brought Chomsky's findings to every man, and he has gathered persuasive data, right? So he draws from Mr. Chomsky's propositions. This is also true and not the answer. Draws from behavioral psychology theories. अब देखो ये एक बहुत ही एक ट्रिक होती है कैट में. Generally it has been seen in all CATRC passages. In all in the sense I meant 21 में भी मिलेगा, 22 में भी, 23 में भी कुछ आरसी होंगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पे उसने एक छोटा सा स्टंट किया है. स्टंट क्या किया है कि आपने यहाँ पे अगर जल्दी जल्दी में इसको पढ़ा, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, राइट, ये पढ़ लिया आपने कि इट ड्रॉज फ्रॉम और ही हैज गैदर्ड डेटा फ्रॉम सच डाइवर्स फील्ड सच एज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. लेकिन यहाँ पे इसने क्या लिख दिया, बिहेवियरल साइकोलॉजी, राइट. तो बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट यहाँ नीचे बात हुई है, बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट. Okay, behavioral psychologist, but this is not relevant to this question, right? Your question says draws, this option says draws from behavioral psychology, so this is wrong. Draws from developmental psychology, right? तो ये एक छोटा सा ट्विस्ट था जिसके कारण ये आंसर करेक्ट है, क्योंकि this is not true and therefore it is the correct answer. It is not true except का question. I hope it is clear. On the basis of the information in the passage, Pinker and Chomsky may disagree with each other on which of the following points. तो मिस्टर चोम्स्की और पिंकर किस चीज पे डिसएग्री करते हैं? ये तो हमने देखा था कि डार्विनियन सिलेक्शन का जो था उनका नेचुरल सिलेक्शन का फ्रेमवर्क, उसमें पिंकर जी कहते हैं कि वो डार्विनियन पे है, चोम्स्की जी डिसएग्री करते हैं. द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर, इसमें डिसएग्री नहीं करते. डार्विनियन एक्सप्लेनेटरी पैराडाइम फॉर लैंग्वेज, यस. द लैंग्वेज इंस्टिंक्ट, बोथ agree. Inborn language acquisition, both agree. Correct answer is true. All right, so that's it for this passage. I hope this passage and associated questions are clear. All right, so I'll bring maybe another passage in a few days. Thank you so much.